Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 7 and the name of our chapter is the earth and its resources. So my dear students, हम earth के मुख्तलिफ resources के बारे में discuss कर रहे हैं. Today we are going to discuss about renewable, जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम उन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रीवियसली हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, इनके इंपॉर्टेंस को. आज हम डिस्कस करेंगे एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. So my dear students, before that, let's quickly recap what we have done in the previous lecture. So quickly tell me, what are fossils, how they are formed. Very good. So now let's quickly move forward towards an activity. So my dear students, here you can see a picture on your screen. This is sun and that is petrol. So quickly tell me, there are two natural resources given. Identify which one can be depleted. So my dear students, इनमें से आपको दो जो है natural resource नजर आ रहे हैं. Sunlight is a natural resource, whereas petrol is also a natural resource. इनमें से कौन सा ऐसा resource है जो कि deplete हो सकता है? डिप्लीट का मतलब है जो कि यूज अप होने के बाद आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. इज इट सनलाइट और इज इट पेट्रोल? पेट्रोल इट इज, यानी कि पेट्रोल वंस इट इज यूज्ड यू कैन नॉट रीजनरेट इट. आप इसको दोबारा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to differentiate between renewable and non-renewable resources. So my dear students, जैसे कि अभी हमने sunlight और पेट्रोल के बारे में पढ़ा, तो आज बच्चे जो हैं इस काबिल हो जाएंगे कि बच्चे differentiate कर सकेंगे कि renewable resources क्या होते हैं और non-renewable resources क्या होते हैं. ठीक है? So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. Can we regenerate petrol as quickly as it consumed? So my dear students, आपकी गाड़ियों में डेली बेसिस पे या आपके घर में जो गैस इस्तेमाल होती है, जब ये इस्तेमाल हो जाती है तो क्या आप इसको दोबारा से फौरन जनरेट कर सकते हैं? जैसे कि लाइट है, आप उसकी लाइट को इस्तेमाल करें तो वो कॉन्टिन्यूसली आती जा रही है सन की लाइट. सो क्या आप इसी तरीके से पेट्रोल या नेचुरल गैस को जनरेट कर सकते हैं या कोल को जो है वो जनरेट कर सकते हैं? नो, क्योंकि हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था. दीज आर फॉसिल फ्यूल्स और ये जो है इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. बहुत ज्यादा टाइम के बाद ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये बनते हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की फॉर्म में, और इनको दोबारा बनने में भी इतना टाइम लगेगा. सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और आज हम यही पढ़ने वाले हैं. So my dear students, now it's time for reading. For I request you all to please open page the topic renewable and non-renewable in your Science 4 books, chapter 7. I hope everybody has opened the page. So now let's quickly move forward towards the reading. Put your fingers where I will read. Renewable and non-renewable resources. All the natural resources that can be regenerated. यानी कि ऐसे natural resources, ऐसे ज़राए, नेचुरल जराए जिनको रीजनरेट, दोबारा से जनरेट किया जा सके एट द सेम रेट एट विच दे आर यूज्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप उनको इस्तेमाल करें, आप उतनी ही जल्दी अगर उनको जनरेट भी कर सकते हैं, देन दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, ट्रीज, विंड एंड द सन, दीज आर renewable resources. We need to regenerate renewable resources continuously. So my dear students, इनको हमें इस्तेमाल करने के लिए इनको continuously हमें renew करना पड़ता है. Natural resources which cannot be regenerated as quickly as they are depleted, such as fossil fuels like oil, coal and natural gas. These are called non-renewable resources. We need to conserve the non-renewable natural resources and use alternate renewable resources. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप जब इस्तेमाल करें तो फिर आप उनको क्विकली जो है वो जनरेट नहीं कर सकते, तो देन दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जांपल्स हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस. सो हमें चाहिए कि हम इनको महफूज रखें और इनकी जगह हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम क्विकली जनरेट कर सकते हैं, हम उनको जो है वो इस्तेमाल करें. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो सन, वाटर एंड एयर, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एयर एंड फॉरेस्ट, then oil, natural gas and coal, these are non-renewable resources.
Now is the time for evaluation. So quickly tell me that what are renewable resources which can be generated as quickly as they were consumed, and what are non-renewable resources which cannot be regenerated as quickly as they were consumed. So then they are non-renewable resources. So my dear students, now is the time for the practice, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the roll number. So what is the difference between renewable and non-renewable resources? So you have to give the difference. So list some renewable resources, कुछ renewable resources के names लिखे, and then list some non-renewable resources. You can take help from the book also, ठीक है? So pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet. So my dear students, यहाँ पे आपको कुछ resources दिए गए हैं. Type the word renewable or non-renewable beside each example. Wind, renewable solar power, renewable wood trees, renewable oxygen, renewable soil, renewable oil, non-renewable leather, renewable natural gas, non-renewable sand, renewable water, renewable paper, renewable. So my dear students, this is how you can pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do MCQ number 8 given on page number 102. You will do the MCQ in your books, and question number 8 in section B, page number 103, you will do the question in your notebooks. So my dear students, today the wrap up. So आज हमने learn किया about renewable and non-renewable resources. हमें चाहिए कि हम non-renewable resources जैसे कि coal, oil और natural gas जो हैं, इनको protect करें, इनको conserve करें, इनको महफूज करें, और हमें चाहिए इनकी जगह हम non-renewable resources जैसे कि water, air और solar energy जो है, इनको जो है वो हम इस्तेमाल करें. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.